Myself, Dr. Ramdev Choudhary, MD General Medicine, Director Dr. Ramdev Hospital सीकर राजस्थान। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे। कारण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। और बहुत कॉमनली ये पेशेंट्स हमारी ओपीडी में होते हैं या किसी भी फिजिशियन की ओपीडी में होते हैं। तो विल डिस्कस टुडेज टॉपिक इज pedal edema. Before understanding pedal edema, first let us see what is edema. Edema is the swelling of the body parts from injury or inflammation. It can affect a small area or whole body and can be caused by drugs, pregnancy, infections. Edema occurs when the tissue swell due to the leakage of fluid and small blood vessels into the nearby tissue. Before going pedal edema, हमें ये पता होनी चाहिए what is edema. So we discuss pedal edema is the swelling of the feet and ankles caused by an abnormal buildup of fluid in the ankle, feet and lower legs. Majority of time, minor occurrence of pedal edema are caused by a buildup known as edema. Edema of the foot can be caused by two different mechanisms and can happen in unison or separately. Pedal edema is a common condition in which the feet and legs expand due to standing or sitting in the same posture for an extended period. If the edema in your feet is caused by a medical condition, it is critical to address that tissue to relieve the edema. Now we will move on the various causes of pedal edema. मैं कॉमन कॉजेज़ की बात करूंगा तो कुछ कॉज ऐसे हैं जो लाइफ में हमारे रूटीन लाइफ में रहते हैं और जिनको ठीक करना भी हमारे पास होता है बिना मेडिकेशंस के। जैसे सबसे पहला कॉज जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज ओवरवेट। एक्सेस बॉडी मास कैन कॉज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द फीट, लेग्स एंड एंकल्स ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन। और बॉडी वेट यदि ज़्यादा है उसको कम करें तो वो ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो है जिसमें स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, लाइक बस में कंडक्टर होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो नाइट ड्यूटी लॉन्ग टाइम तक करते हैं, इस तरह से जो ड्यूटी जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ pedal edema. The muscles are unable to pump bodily fluid towards the heart while they are inactive. The buildup of water and blood in the legs can induce swelling. On the other hand, edema can be an indication of a more serious underlying medical issue. In some circumstances, edema can be caused by variety of disease and conditions, including a blood clot in the leg. When certain components of your blood thicken and form a semi-solid mass, blood clot develops. The process can be triggered by an injury, but it can also happen inside blood vessels that are not damaged. When a blood clot develops in a vein in the leg, it can disturb blood flow, resulting in swelling and pain. Next cause is injury or infections. Sometimes the swelling is due to an injury or infection in the foot, legs or ankle, and there is excessive blood flow to the affected area. Next is venous insufficiency. It is very common in females, especially during pregnancy time or after pregnancy, after labor. The leg veins or blood vessels are weakened or damaged in chronic venous insufficiency, and the veins obstruct the flow of the blood back to the heart, causing blood to pool in the legs and result in swelling. Next cause is preeclampsia. This condition is also related to the pregnancy. During pregnancy, the disease causes elevated blood pressure. If the blood pressure is too high, it can lead to impaired circulation and swelling in the legs, face and the hands. Next condition is related to the liver, especially the patients those are chronic alcoholics. Cirrhosis is the condition indicating severe scarring of the liver induced by alcohol consumption or infections.
The disorder is characterized by high blood pressure and impaired circulation in the feet, legs and ankles. Next condition is related to the heart, and it is also very common in the OPD. One or both of the lower chamber of the heart lose their capacity to effectively pump blood in the congestive heart failure. Blood could back in the legs, ankles and the feet, as a result causing edema or swelling in the lower limbs. Next cause is kidney diseases. Edema can occur when there is too much fluid and salt in the bloodstream due to renal failure. Edema caused by renal failure mainly affect the legs and face also. Next is inadequate lymphatic system. As I told, the veins and arteries bring mainly the blood from the lower limbs, but the lymphatics are mainly the channels for the tissue fluid. That is also very important cause in the edema. The lymphatic system of the body aids in the removal of the excess fluid from the tissues. If this system is compromised, such as by cancer surgery, the lymph nodes and the lymphatic vessels that drain an area may not function properly, resulting edema or swelling at the lower limbs. Severe and long-term protein deficiency. If the diet is deficient in the protein for a long period, it can lead to the fluid accumulation and resulting edema. Now will come how to examine or identify the pedal edema. So I'll tell you, symptoms of edema include swelling or puffiness of the tissue just beneath the skin, skin that is stretched or shiny, skin that retain a dimple after being pressed for several seconds. You can say that बेस्ट तरीका क्या होता है, एडिमा कैसे पहचाने? तो इसका तरीका ये है कि जैसे टीबिया की सिन है लोअर लिम्स में, इसके अगेंस्ट में यदि हम 10 से 15 सेकंड्स तक अपने अंगूठे से या अंगुली से प्रेशर रखें और वहाँ पर एक डिम्पल रह जाए, दैट इज पिटिंग एडिमा. एडिमा 2 टाइप होता है, जिसमें नॉन पिटिंग और पिटिंग होता है. आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो पिटिंग एडिमा के बारे में कर रहे हैं, और इसका जो तरीका होता है देखने का वो यही होता है. Now we'll move on treatment part of the pedal edema. Mild edema normally goes away from its own, especially if the affected limb is elevated above the heart. More severe edema, on the other hand, can be treated with medications and that assist your body remove extra fluid through urine. However, based on the patient's medical history, the doctor will assess if these drugs are an appropriate fit. आप कह सकते हैं कि जब एडिमा कम मात्रा में होता है, माइल्ड होता है, तो उसका बेस्ट तरीका होता है, जैसे आप रात को सोते हैं तो अपने पैरों के नीचे रजाई गद्दा इस तरह का लगाएं, जिससे फ्लूइड आपका जो लेग्स का लेवल है वो आपके हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो. तो स्पेशली उन पेशेंट्स में, जैसे जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनकी काफ मसल्स वीक हो गई है, हमें ये चीज़ बहुत समझने वाली है कि जैसे हार्ट पूरी बॉडी को पंप करता है, उसी तरह से पैरों में जो हमारी काफ मसल्स होती हैं वो सेकंड हार्ट की तरह काम करती हैं, और वो लगातार अपने संकुचन से लोअर लिम्स के जो ब्लड और फ्लूइड होता है उसको हार्ट की तरफ पंप करती हैं. लेकिन एज के कारण, बुढ़ापे के कारण, लंबी बीमारी के कारण या प्रोटीन की कमी के कारण यदि हमारी काफ की मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो पंप नहीं कर पाती हैं. तो उन कंडीशन में अपन क्या करें? तो एक तरीका तो है जिस तरह से बताया कि पैरों के नीचे अपन कुछ सपोर्ट रखें. दूसरा तरीका ये है कि पैरों को सीधे रखें और उनमें इस तरह का मूवमेंट करवाएं कि काफ मसल्स हैं वो पंप करने की स्थिति में आ जाएं, और इस तरह से हम जो माइल्ड कंडीशन होती है एडिमा की उसको ठीक कर सकते हैं. तो दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. मूविंग एंड यूजिंग द मसल्स इन द एडिमा अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, particularly your legs, can assist a pumping the excess fluid back toward your heart. Ask your doctor and activity that might help you minimize your edema. दूसरा चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि आप अपने लिम्स को एलिवेट करके रख सकते हैं. इसके अलावा जैसे मसाज है, स्ट्रोकिंग द अफेक्ट एरिया विथ फर्म बट नॉट पेनफुल प्रेशर टुवर्ड द हार्ट मे एड इन मूविंग द एक्स्ट्रा फ्लूइड आउट ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन.
The another part of the treatment is compression bending. If one of the limb is affected by edema, the doctor may advise wearing compression stocking, sleeves, or gloves to avoid the additional swelling. These are normally used after the swelling has subsided. The garments keep pressure on your limbs to prevent fluid from collecting in the tissue. Next is reducing the salt intake. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मोस्टली जब हम रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो पेशेंट अपना साल्ट बिल्कुल बंद कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है. किसी भी आदमी को जीने के लिए कम से कम 2 ग्राम नमक की आवश्यकता 24 आवर्स में ज़रूर होती है. तो यदि कोई कहे भी कि भाई आपको नमक कम करना है तो नमक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके जो द्वार हैं, गेट हैं, चैनल्स हैं, वो सोडियम और पोटेशियम के द्वारा ही खुलते और बंद होते हैं. इसलिए जब सूजन कम करनी है और आपको यदि एडवाइस की जाती है कि साल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है, दैट मीन्स कम करना है, बंद नहीं करना है. एंड आप अपने डॉक्टर से या अपनी फिजिशियन से, कंसल्टेंट से आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ माय सिम्टम्स, व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल, और आई हैव अदर मेडिकल प्रॉब्लम, विल द ट्रीटमेंट इंटरफेयर विद देम. Lastly, I would like to suggest that reducing salt consumption and doing some daily activity can reduce the formation of edema. It is important to consult a physician if you see any sign and symptoms of the edema to avoid further complications like difficulty in walking, stiffness, pain, and decreased blood circulation. Thank you.